This is a common question from all of the pioneers. Probably this question in our GCV ambassador. They cannot see through. Actually, these days I post my articles 26, 27, 28 to 29. This is very important. I hope you can read again and again to help yourself to understand. So right now, I would use my language, my voice message to answer your question. Okay, you can translate now. डोरिस ये कह रही है कि उनके कुछ आर्टिकल्स उन्होंने पोस्ट किया है और इस आर्टिकल्स में उन्होंने सारा चीज एक्सप्लेन कर चुकी है। वो अब उसी आर्टिकल्स को रेफर करते हुए हमें बताएगी कि 20th फेब के बाद जो भी डेवलपमेंट्स हुआ है उसके बारे में वो हमें आज बताएगी। डोरिस, ओवर टू यू। Yes, okay, thank you. So before I explain this thing to you, I give you an analogy so you can imagine what happened. Okay, for example, you see a big elephant in India. Okay, India has big elephants. Okay, if you are a blind man, so when you touch the elephant, if you touch the ears, you will think this elephant is ears. It's like how to say? It's like a flat one. They think this is ears is a elephant. Okay, if you touch the legs, it's a very big, strong legs. You think this is elephant because they're blind. They cannot see the whole picture, right? Right now in our community is the same thing. Many pioneers, because they in short of education, in short of the vision, they only pay attention to their KYC, the migration, right? Most of pioneers, they only pay attention to that. They just know demand the core team or GCV core team, give them something, promise them something, always ask a question. But here the thing is, no, we need to work together. We must unite it. Because only when we work together, we can move forward. But it's very important. Before we move forward, we must make everyone understand what happened. Okay, you can translate. Thank you. हम सब ने एक कहानी सुनी थी एक हाथी की और 5 अंधे लोग रहते हैं और हर एक अंधा जाके कान पकड़ता है और उसे लगता है ये कुछ और है। कोई उसका पूंछ पकड़ता है, उसे लगता है ये कुछ और है। कोई पाँव पकड़ता है, उनको लगता है ये कुछ और है। वो जब पट्टी अपने आंख से खोलते हैं तब उनको लगता है कि ये एक हाथी है। उसी तरह हमारे कम्युनिटी में भी हमको केवाईसी और मेननेट के सिवा हमको कुछ पता नहीं है। जो कोर टीम करती है, क्या कोर टीम कर रही है, हमें कुछ भी पता नहीं। तो कोर टीम यही चाहती है कि कम्युनिटी के साथ हाथ जोड़ के काम करें, कोर टीम पे ट्रस्ट करें। जब आंखों से अपने पट्टी खुलेगी हमें पता चलेगा कोर टीम क्या कर रही है और क्या करना चाहती है और ये टाइम बताएगा। Okay, thank you so much. Excellent. Then talk about the things. What is our goal here? What you expected, pioneers? You expected is your financial freedom. I believe everyone come here because in their mind, pie worth a lot of money. When they open mainnet, they can sell their pie. And also right now we have GCV value created. So they have a very high expectation. It will right away after open mainnet, they can sell it, right? Most of pioneers were thinking this way, but it doesn't work. It's not true like this, okay? Because if we want to reach, for example, you want to go to the destination, you must cross a river or sea. How can you cross it? Can you just walk on the sea? You can't. You must have a vehicle. You must have a boat, right? What is the boat? The boat here, I tell you, is the exchange market. Why? Because during the enclosed mainnet, right, for 3 years, what we are doing, we create high value and we reach our goal already. GCV, we spent almost 3 years. Okay, the ecosystem, we have blockchain record, 5 million blockchain record, occupy more than 80%. Okay, last almost 1 year. That's the reason in our code 314159 value has been fixed. Okay, you can translate, right? Yeah. तो हम किसी भी सफर में निकलते हैं तो डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए बीच में अगर कोई समुद्र आ जाती है या कोई रिवर आ जाती है तो हमें जो साधन हम लैंड पे यूज कर रहे थे वो साधन अब नहीं चलेगा, हमें बोट की जरूरत पड़ेगी या कोई शिप की जरूरत पड़ेगी।
उसी तरह हमने हमारा डेस्टिनेशन पार करने के लिए अब भी कुछ काम बची है, उस काम के लिए कुछ और चीजें करनी पड़ती है और वही काम अभी चल रहा है। तो हमें उस पर ये विश्वास करना चाहिए कि वो काम चल रही है और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए हमें थोड़ा दिन रुकना पड़े। What I'm talking here is let you know inside our community we create the value because this is inside our community during enclosed manner. Understand? This is inside. We successful already. So I let you know. Congratulations from last year, June 28. We confirmed that, and also recently before February 20, we can see the code has used fixed. They used to use target 314159. Now they changed to fixed. Okay, but why we are on exchange market? I tell you, this is the value inside. Then I talk about the price outside. Okay, yesterday I write the article 89. The title is Conquer the World. The best opportunity to join the Pi Network. So it's the time we conquer the world. We cannot just swimming in our garden. We need to go to outside. We go to the sea. Okay. So right now we enter into the next stage. We need more people to join Pi Network. So that's why we own exchange market. Because exchange market, no price. We can have more people to join in. How can we be a global currency? We only have 11 million pioneers. How can we develop ecosystem? We only have 11 million pioneers, the pioneers wallet, right? Now you will ask, why core team don't open more migration? Why not give me KYC? Why not give me migration in my wallet? Okay, I'll ask you, what will you do if you have Pi? You will sell, right? When you sell, on exchange market, you will increase more, make the price hard to control because we cannot buy all of this Pi. But right now, we control the supply. Then we increase demand. That's why the core team has what? Auction name, auction. This is create demand. In that way, we can buy out all of these people, pioneers. They cannot recognize the value. We buy from them. We transfer the wealth from the poor people. There will always be poor people. The rich people will be rich again. Okay? Translate, please. Yeah. तो ये कह रही है कि जब तक हमारा एंक्लोज मेननेट था, हम एंक्लोज मेननेट में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं और जून 28 को ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो सक्सेस है वो पक्का है, जो हो चुका है वो पूरे दुनिया को भी समझ में आ जाएगा जून 28 को कि हम जो एंक्लोज मेननेट में कर रहे हैं वो बाहर सबको समझ में आ जाएगा कि हम सक्सेसफुल हैं। वो कल ही एक आर्टिकल में लिखी थी डोरिस ने कि अब जो है हमें ज्यादा से ज्यादा लोग पाई नेटवर्क में जुड़ना जरूरी है क्योंकि एक ग्लोबल करेंसी 11 मिलियन पायनियर्स से नहीं हो सकता। हमें और भी पायनियर्स चाहिए, हमें और पायनियर्स का साथ चाहिए फॉर टू पाई नेटवर्क को एक ग्लोबल करेंसी बना सकती है। और इसी वजह से हमने जो अभी ऑक्शंस डोमेन का शुरू किया है उसमें से ज्यादा हम एक्सचेंज से हमारे पास वो पाई को वापस ला रहे हैं और वही अभी कोशिश जारी। Yes, over to you, Doris. Thank you so much. So I give you the logic background here is our white paper said very clearly, we want to be a currency, right? The payment, peer-to-peer payment method. So that is the function of a currency. Currency has 5 functions. The first is value scale. The second one is the circulation. And the third one is payment. The fourth one is storage. And the fifth one is global currency, step by step. So we have the first function set up already. We have the GCV. This is the scale. This is the value scale. The second one is circulation. We need to have circulation inside already. Right now, our target here is to get widely adoption, the dispersed of the character of currency. Currency has 2 characters. First one is widespread, more people to hold it. Otherwise, how can be currency? Only a few people use it. We need all global people use it. Okay, so this is our target. First target. The second target is what? The currency must be stable. So why we on exchange market? Because right now we open the door to more people widely adopted
So that's why we advocate pioneers. If you don't have your KYC migration, why not buy right now? Okay, to go to bid your domain name. But this is not the most priority. Priority is to introduce Pi network to outside people. Our target is 8 billion. If it's not 8 billion, at least 4 billion. Only you occupy almost half of the population. It can be a global currency. However, if you don't, how can it circulate worldwide? It can. So it's very good. It's very good when some people, pioneers, don't understand, they sell in no price. We get an advantage of it. A benefit of us. It's easier for us to introduce Pi to outside, right? So the next one is, because supplier has been controlled already, we increase demand. What will happen? We'll buy out. When we buy out at no price, then our GCV community will all support GCV in exchange market or just sell GCV. In that one, we can make it as a stable price setup. When it is set up, that means it complies with all of the country's regulation. Then what happens? The code can be implemented. Okay, understand? Thank you. Right. तो बेसिकली डोरिस ये कह रही है कि एक करेंसी को पॉपुलर होने के लिए उसका वैल्यू होना जरूरी है, जो हमने ऑलरेडी जीसीवी सेटअप कर दिया है। उसमें सर्कुलेशन होना जरूरी है, उसमें एक पेमेंट और पेमेंट एडॉप्शन होना जरूरी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग होना जरूरी है, और इसमें से हम हर एक चीज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जीसीवी ऑलरेडी सेट हो चुका है, सर्कुलेशन इनसाइड पाइनियर्स के इनसाइड जो सर्कुलेशन वो ऑलरेडी हो चुका है। हमें अभी उसको बाहर की तरफ लेके आके उसका सर्कुलेशन बढ़ाना है। हमें जो पाइनियर्स अभी 11 मिलियन है उसको 8 बिलियन का पॉपुलेशन में वो बोल रही है कम से कम आधा 4 बिलियन पॉपुलेशन को तो एटलीस्ट यूज करना जरूरी है। वो अभी ऐसा होने वाला है। पेमेंट का एडॉप्शन, जैसे ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट्स हमें सिस्टम में लाना है और पाई को एक्सेप्टेंस का जो एडॉप्शन है उसे हमें ये करना है। ये जैसे जैसे होगा हमारा करेंसी पॉपुलर होते जाए। Yes, Doris. Okay, so I want that all pioneers understand. For example, right now we just let everyone. Okay, we announce. For example, announce the GCV already. So the announced GCV means we can only inside our community we have the Pi value as a GCV, right? But how about the merchant? Can merchant afford it? If you are a merchant, dare you accept the Pi as a payment? For example, you sold all of your product $314,159 US. Probably this you need to sell for 6 months. What will happen? Because we don't have the industry chain. Nobody can accept your Pi as payment to buy the material. No employee accept the Pi as no wages. What happened? They only exchange dollars. Will you do that? Will you accept the Pi payment? Is the merchant stupid? No, businessman. Every businessman knows the risk. Of course, it can't. When the exchange market is $1, $2, or maybe even $1,000, $10,000, it is not equal, aligned with our GCV value, it will bankrupt. All of the ecosystem will collapse in one day. Do you want this to happen? Of course not. All of our 10 years, 6 years, all of hard working just be destroyed in one day. So all of pioneers must understand how the business is working. Okay, I can translate. Thank you. Yeah. तो हमने जो GCV अनाउंस किया है वो इनसाइड कम्युनिटी के लिए किया है। अभी तक ये आउटसाइड कम्युनिटी के लिए एक तो अनाउंस होना बाकी है और दूसरा उसका एक्सेप्टेंस होना भी बाकी है। आज के तारीख में भी इनसाइड द कम्युनिटी जो मर्चेंट्स है वो जीसीवी वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसे जब हम अनाउंस करेंगे तो आउटसाइड मर्चेंट्स भी इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको एक उदाहरण के तौर पे, आज अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है तो एक एम्प्लॉय पाई में सैलरी ले पाएगा क्या? नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो अगर पाई में सैलरी ले भी लिया वो पाई को यूज कहाँ करे? तो ये जो एक्सेप्टेंस है, ये एक्सेप्टेंस का ही काम अभी कोर टीम कर रही है और ये थोड़ा टाइम लगने वाला है। हमारा जो 6 साल का जो मेहनत है वो 6 साल का मेहनत अगर हम बिना सोचे समझे इसको अनाउंस कर दिया और बाहर एक्सेप्टेंस उसका नहीं हुआ, ये पूरा
जो हमारा 6 साल का मेहनत है ये कोलैप्स हो जाए, और ये कोलैप्स ना हो इसके लिए कोर टीम अपना स्टेप्स सोच समझ के आगे कर. Yes, Doris. Thank you. I know a lot of pioneers ask me this kind of questions. Why not open network? We don't have 100 dApps. Where is the 100 dApps? Why the core team didn't list the ecosystem? Only 5% market. I tell you already. Because nobody dare to accept the Pi payment. So this is not the right time to let the 100 dApps or all ecosystems out, because high risk. Because of the liability, okay, the Pi network also has liability, and the merchant has liability. Everyone has liability. This will collapse. It doesn't work. Okay, the price is not decided by the ecosystem right now, because right now we just in between, in the outside of people accept the Pi payment and our inside. Do you understand why we use partial Pi payment GCV for more than 6 months already? Because of we in our community accept Pi payment, but outside don't acknowledge, include the government. Can you pay the Pi as a tax? No, the government don't accept it. You must exchange fiat currency. So this is the question here. Okay, all of the pioneers only want to get the money, but when we get the money, we must create the condition. We must make it successful. Successful is the priority. Your migration is not important. Okay, the successful, you will get financial freedom. So we must make sure Pi network successful. It's not your use. If everyone, okay, core team allow you all of the 60 million pioneers get a wallet, what happened? Will never success in the exchange market, because too much supply of Pi. So we control, core team always control the supply. That's why you cannot get a KYC and supply. Okay, and migration. Translate. Thank you. Right. तो इसके पहले जो पॉइंट डोरिस ने बताया था वही वो फिर से दोहरा रही है कि इनसाइड एक्सेप्टेंस ऑफ जीसीवी है, इनसाइड जो मर्चेंट्स है वो पाई एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अभी तक इसका एक्सेप्टेंस आउटसाइड वर्ल्ड में हुआ नहीं. आउटसाइड वर्ल्ड अभी तक इसे अपनाया नहीं है पाई को. गवर्नमेंट को आप टैक्स भर सकते हो पाई में, नहीं भर सकते हो, तो गवर्नमेंट का एक्सेप्टेंस अभी तक हुआ नहीं. पाई का सक्सेस होना कोर टीम का प्रायोरिटी है. आपका माइग्रेशन होना या आपका केवाईसी होना ये कोर टीम का प्रायोरिटी नहीं है अभी के लिए. अभी के लिए उनका मेन प्रायोरिटी ये है कि जीसीवी सक्सेसफुल होना चाहिए, आउटसाइड वर्ल्ड में पाई का एक्सेप्टेंस होना चाहिए और पाई सक्सेसफुली एक्सेप्ट होना चाहिए. कोर टीम का ये फोकस है कि वो सप्लाई को जितना कम रखे आज के तारीख में उतना उनके लिए अच्छा है. टू मच सप्लाई अगर हो जाएगा तो ये जो हमारे 6 साल का मेहनत है वो कोलैप्स हो जाएगा. यस डोरिस, ओवर टू यू. Thank you so much. So all of the pioneers to understand everything, if you want to succeed, they have one step by one step. Okay, the first step you've complete, then is the next step. It's not you jump from the first one, jump to the fifth one. As I always told you the story, like a rich person, rich man, a businessman, he see a very beautiful building on the third floor. The third floor, the building is very beautiful. Then he asked the contractor to build a building, high building. Said, okay, I don't need the first floor. I don't need the second floor. I don't need the foundation. I just want the third floor. So what happened? It collapsed. So you understand, if you want to get financial freedom, you must cooperate. We have our strategy. Our strategy, the first one, we succeed, is inside our community. We create the value. 314159 is called GCV already. It's in the code, okay? The second one is we need have the more people to join in. We need to have all the worldwide company, the company investors, more people join in. That's why we have the auction, the domain name auction. Why? Because we need to introduce to them. This is Web 3.0 blockchain. We have very powerful, not only Pi coin, but also the blockchain. Very powerful. Our task here is to introduce them to accept Pi as a payment. But we not start right now because we need to fix the price. So during this probably 3 months, because core team give us the deadline for the auction is by June 28, right? So probably they estimate in these 3 months we need to fix it. Okay, how to fix it? We use the no price, let more people to join in. Right now it's almost I think it's
300 million pie in the exchange market. It's very limited. If we open to more people outside of our community, include the pioneers don't have KYC migration, they also need to buy some because after opening they don't have pie in hand, right? Or maybe you lock it, or maybe some sanctioned countries in the area. Why not buy some? Maybe 10, maybe 20, which is very good. You can get a financial freedom right away. Our task here is to buy out all of the low price. Okay. You go ahead. Thank you. तो डोरिस ये कह रही है कि कोई भी सपना पूरा करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। कोई कॉन्ट्रैक्टर एक बिल्डिंग बनाता है, वो ये नहीं सोचता है कि 7वां मंजिल कैसा बनेगा बिना फाउंडेशन का। पहले उसका फाउंडेशन बनता है, उसके बाद पूरा बिल्डिंग बनता है। वो भी यही कह रही है कि जो कोर टीम कर रही है वो स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस को अचीव करते जा रही है। उनका पहला प्रोसेस ये था कि जीसीवी को फिक्स करे, तो जीसीवी उन्होंने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है। अब उनका प्रोसेस ये है और वो यही करना चाह रहे हैं अगला 3 महीने में कि मार्केट में जितने एक्सचेंजेस में पाई जा चुकी है उसे कैसे वापस लिया जाए, और उसी गोल को रखते हुए उन्होंने अभी डोमेन नेम्स का एक ब्रिलियंट आइडिया लेके आया है। और ये डोमेन नेम्स के वजह से अभी काफी लोग मार्केट से पाई खरीद रहे हैं और डोमेन नेम्स रजिस्टर कर, और वो बोल रही है कि शायद एक 3 महीना लगेगा इस ये पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो हमें सब्र से रहना चाहिए, हमें कोर टीम को सपोर्ट करना चाहिए। वो कह रही है कि हम भी मार्केट से हो सके तो 5 या 10, अगर पैसा है तो कोई एक्स्ट्रा पैसा है तो 5 या 10 पाई भी अगर खरीदे तो वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाए। यस जोरिस। Thank you. So I know some pioneers probably have another question that why not core team announce the price right now? They can announce it, right? But I tell you, they cannot announce. Our relationship, pioneers with core team, I give you a lot of analogy to let you understand what's the relationship. They are not our employers, okay? First of all, you must understand, they are not our employers. We are not employee. They are not our boss. And also, for us, we are not customers. Customers, you can sit over there to wait their service. Here, you are the owner. You are the Pi coin owner. You need to fight. We have equal relationship with the core team. We can say they're just like a production department in the company or in a factory. For our pioneers, we have our task here is marketing. That more people accept the Pi payment. And also we have also GCV. We're making the market accept the GCV price. So we have our task. For if the core team announce the price on exchange market, do you know what's the result? The result is the Pi network will be shut down. Okay, because this is not allowed for the cryptocurrency, the project owner to announce to control the price. Understand it? The price must automatically from the market. Okay, this is a fair. And also for all the countries' regulation, they don't allow it. That's the reason we cannot implement our code. Everyone just expect open mainnet, but you must understand, right now we just open network. It's not open the source code already yet. The source code is 314159, not implemented. Because this is the weight, the price fixed. You can go ahead and translate. Thank you. तो ये कह रही है कि कोर टीम जो हो एम्प्लॉयर नहीं है और हम पायनियर्स एम्प्लॉय नहीं है। हम इस पूरे इसमें इक्वल रिलेशनशिप में हैं। आप ये समझो कि एक कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो है कोर टीम, और एक मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट है, वो है पायनियर्स। कोर टीम का काम है सॉफ्टवेयर बनाना, कोड्स बनाना, अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेके आना, और पायनियर्स का काम है ज्यादा से ज्यादा पायनियर्स को इसमें जोड़ना, ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट्स है उनको इसमें जोड़ना, पाई नेटवर्क के बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करना, ये पायनियर्स का काम है। हम दोनों इसमें इक्वल पार्टनर्स है। ये नहीं कि कोर टीम ओनर्स है और हम एम्प्लॉइज है, या कोर टीम बॉस है और हम उनको रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर जीसीवी का प्राइस का एक्सेप्टेंस होना है मार्केट में तो पायनियर्स का उतना ही काम बनता है जितना कोर टीम का। कोर टीम ने ऑलरेडी कोड में 314159 का सोर्स कोड में उन्होंने